Hello friends, welcome to ProTalent, and we are bringing one very unique and awesome, we can say, session for you, which is called Principles of International Law and United Nations. I'm sure large number of you must be, you can say, preparing hard for your preparation. From CLAT exam point of view, if I talk about the importance of international law and United Nations related information is becoming very crucial. क्लैट के एंगल से अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ के बारे में जब हम यू कैन से क्वेश्चंस देखते हैं, सो दे ट्राई एंड फोकस ऑन कन्वेंशंस, ट्रीटीज, ठीक है, कस्टम्स, उसके ऊपर बातें होती है. मोर इम्पोर्टेंटली यूनाइटेड नेशन के ऊपर सवाल बनते हैं. सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस miscellaneous session series we are going to cover all this different topics. Okay, so this is parallel going on with our, you can say, law of crime. So crime is going on, okay, and we will continue this series, and after we complete this crime we'll go for tort and then contract. Okay, so this is how the entire series is going to be developed. So ये जो miscellaneous series हमने चालू करी है, इस miscellaneous series के अंदर we will try and cover this international law, then we will try and cover few other miscellaneous law related thing, ठीक है, और उसके ये चलेगी पैरेलल लॉ ऑफ क्राइम के साथ, ठीक है. तो मेरे हिसाब से दिस विल गिव यू अ गुड सपोर्ट फॉर योर प्रिपरेशन. रिमेंबर, ये वीडियो पूरा का पूरा आपको अब protalentdigital.com पे मिलेगा. यूट्यूब के ऊपर यू विल बी गेटिंग अ लिमिटेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, सो कीप दैट इन माइंड. ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, ये शुरुआत कैसे हुई, किसने ये वर्ड दिया, who gave this word, and how did it all start is what we are trying to understand. So it all started by a British jurist called Jeremy Bentham. Jeremy Bentham is a very famous philosopher, and that is for jurisprudence. Jurisprudence के लिए इतने महत्वपूर्ण जो फिलोसोफर है वो है जेरेमी बेंथम. पॉसिबली उनके जैसे विचार बहुत सारे और लोगों के रहेंगे, पर ये उन सब में एट द पिनेकल, एट द टॉप रहते हैं. जेरेमी बेंथम आपको पढ़ने पड़ेंगे जब आप एलएलबी करने जाएंगे, उनके बारे में काफी डिटेल में आपको स्टडी करवाई जाएगी. सो दिस इंटरनेशनल लॉ वाज द फर्स्ट टाइम द टर्म वाज यूज्ड बाय जेरेमी बेंथम इन 1780, and its origin, you can say, is referring to Mr. Hugo Grotius, and therefore it is also the gentleman called Hugo Grotius is known as father of international law. एक मार्क का AILET में जीके का सवाल बन सकता है, that which of the following is known as father of international law. So please make sure that you remember this name. So the big question all of us have is that what are the sources of international law? इतने सारे countries हैं, सभी countries sovereign हैं, in the sense they are God in themselves. इनके ऊपर कोई डंडा लगाने वाला कोई बॉडी तो है नहीं, तो इतने जो सोवरेन नेशन है उनको कंट्रोल कैसे किया जाए. वो एक दूसरे के साथ जब रिलेशन डेवलप करे और कभी डिस्प्यूट आया, ऑन व्हाट ग्राउंड वी कैन से डेवलप कैन से सर्टेन प्रिंसिपल्स, एंड सो दैट we can arrive at a proper justice. एक प्रॉपर न्याय की प्रक्रिया हम कैसे डेवलप की जाए, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े सवाल लोगों के मन में पैदा हुए. प्राइमरली इट वाज डेवलप्ड इन सम अराउंड 18th सेंचुरी, और वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज 21st सेंचुरी में इट हैज इवॉल्व्ड इन अ वेरी ग्रेट वे. एंड इट्स नॉट जस्ट यू कैन से इन 18th सेंचुरी इट गॉट डेवलप्ड. मेरा मानना है इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण, महाभारत, ये जो अलग अलग देशों के साथ ट्रीटीज करना, एग्रीमेंट करना, इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम अर्लियर. आज वो थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और सही तरीके से इवॉल्व हो चुका है, ठीक है. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस इंटरनेशनल लॉ? टुडे देयर आर 8 सोर्सेज ऑफ दिस इंटरनेशनल लॉ. दे आर डिवाइडेड इनटू, यू कैन से, प्राइमरली ट्रेडिशनल as well as non-traditional scenario. Okay, so what are the traditional one? 5 traditional sources.
Which are the 5 traditional sources? Traditional sources are certain, you can say, principal one, and the certain are subsidiary one. That means certain sources which are main sources, and certain sources are basically the subsidiary, that is supported one. Which are the main sources? Primarily a treaty, an agreement. Okay, treaty is an agreement. हम देखेंगे अभी डिटेल में उसके बारे में. Then there are customary rules of international law. International law के लिए there are customary rules available, as well as there are general principles. These are the main ones. Okay, these are the main ones. While in the subsidiary scenario, what happens? There are judicial decisions, there are writings of the most highly qualified scholars like Jeremy Bentham हमने देख लिए, या अमर्त्य सेन हो गए, या जॉन रॉल्स हो गए. तो इन लोगों के जो विचार है, ठीक है, they are important. So people like Francis Fukuyama, when he writes about the state policies and his analysis is known to large number of people, तो वो भी एक तरीके से influence करते हैं. Okay, so these are the traditional sources. I'm going to discuss है ना यूनाइटेड नेशन का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एक एक स्लाइड पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ताकि आप फटाफट उसको समझ पाए. सो यूएन 1945 में बना हुआ था. 193 सोवरेन नेशंस है, एंड एंटोनियो गुतेरेस इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विच इज सेक्रेटरी जनरल, है ना. अच्छा, उसकी पहले वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर थे. ओके, ही वाज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ओके, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. The power is bestowed in its charter. This is what the important part. हमने अभी चार्टर देखा. पीस सिक्योरिटी के बारे में बात होती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होती है, इक्वल राइट्स के बारे में बात होती है. ठीक है, मूविंग फर्दर, नाउ यूनाइटेड नेशंस programs and funds is what we are going to discuss. We talked about 6 organs. Now we are talking about their programs and funds. So I'll be doing a little fast here. ठीक है, मैं इसको बहुत तेजी से जाऊंगा. आप इसकी PDF अच्छे से डाउनलोड करके एक एक लाइन पढ़िएगा. ठीक है, UNDP, United Nations Development Program, works in 170 countries with a motive to wipe out poverty, lessen inequalities, forge resilience and bolster progress. ठीक है, this is a developmental agency. This is UNDP. Okay, and another body which is called OPCW, Organization for Prohibition of Chemical Weapons. इनको I remember 2012 में नोबेल पीस प्राइज मिला था. ठीक है, सो OPCW is another important body. So this is how broadly international law related basic information is required from your side. Okay, from CLAT angle. तो आपको ये पूरा यूनाइटेड नेशन के सबके नाम पता होने चाहिए. जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे वो पता होने चाहिए. उनके पोजीशन होल्डर कौन है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, so I hope this will be very useful to you. Okay, remember this entire video is fully available at protalentdigital.com. ठीक है, यहाँ YouTube के ऊपर आपको उसका करीबन 10 मिनट का एक छोटा सा ग्लिम्स है. पूरा वीडियो जो करीबन 41 मिनट का है, this entire video will be available only at protalentdigital.com and that is available free of cost. आप वहां से डाउनलोड करिए, वीडियो वहां पूरा देखिए and make proper notes. You can very well share your notes with us. Okay, you can share your notes on 9904788422. आप यहाँ पे अपने notes share कर सकते हैं. I will be sharing those notes to the entire country. Okay, great. Thank you very much and all the best. Do not forget to share this video. Ask your friends to register at protalentdigital.com. Okay, and comment. I'm going to read all your comments. Okay, thank you very much and all the best.